శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధగే నిధగేర్ధినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసేన్నమః. శృతి స్మృతి నదీపూర్ణం శాస్త్ర కల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తి ఉదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఖనోర్నవం. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతకే. యస్య విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రగే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ విష్ణురాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే కృష్ణా కావేర్యోః మధ్యప్రదేశే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాదే షష్ఠే సంవత్సరాణం మధ్యే శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ మమ. భక్తులందరూ ముందుగా మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి. మీ నక్షత్రము, మీ రాశి, మీ నామధేయాన్ని స్మరించుకోండి. మీ ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను మనసులో స్మరించుకుని స్వామివారిని ప్రార్థన చేసుకోండి. గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్య సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్య విజయవీర్య అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీనివాస
కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ ఫలసిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వకార్య అనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమినీలా సమేతస్య శ్రీమత్ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఏతత్ శేషాచల నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం శ్రీ వైఖానస దివ్య భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఏడు కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద, ஆபத்பாந்தவ அநாதரக்ஷகா கோவிந்தா கோவிந்தா, குன்றமேந்தி குளிர்மழையை காத்தவன் அன்று ஞாலம் அளந்தபிரான், பரன் சென்று சேர்த்தொழ நம்பினை ஓயுமே என்று அந்த திருமலையப்பனை தரிசனம் செய்து கொண்டு இதோ பக்தர்களை வரவேற்பது திருமதியே அருணா. பக்தர்களே, திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவச்சனத்தை செவிக்க உள்ளோம். அகிலாண்ட கோட்டை பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். சித்திரை மாதம் புதன்கிழமை திரையோதசி மற்றும் அஸ்தம் நட்சத்திரத்துடன் கூடிய பொன்னான புதன்கிழமை. பக்தர்களே, இதோ எம்பெருமானை செவித்துவிட்டு பிராட்டிமார்களையும் செவிக்கலாம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமியே கோவிந்தா கோவிந்தா. இதோ விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவச்சனம் ஆரம்பமாகிறது. அந்த சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு முதலில் ஆராதனை செய்த பிறகே மற்ற கைங்கரியங்கள் ஆரம்பிப்பார்கள். சேவிக்கலாம். శ్రీలక్ష్మీ వల్లభారంభాం విఘ్నోమణి మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం. శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమః. ప్రాణానాగమ్య అద్య పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాగామస్యాం శుభతిదో శ్రీ భగవదాజ్ఞయా భగవత్కైంకర్య రూపం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీగపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీభౌమలీలా సమేతస్య శ్రీమదఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఏతత్ శేషాచల నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం శ్రీ వైఖానస భగవచ్చాస్త్రోక్త మార్గేణ క్రియమాన వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి అస్మిన్ దినే క్రియమాన అంకురారోపణ బీజావాపన రక్షాబంధన అగ్ని ప్రతిష్ట మాంగళ్య పూజ ప్రధాన ప్రవేశ లాజహోమాది సమస్త కర్మసు స్థంటిల పరిధి పరిస్తరణాది సర్వోపకరణ ద్రవ్య సిద్ధ్యర్థం వృద్ధ్యర్థం శాంత్యర్థం అభ్యుదయార్థం చ సద్భిర్మహాజనై సహసపుణ్యాః కర్మ కరిష్యన్నాదౌ నిర్విఘ్నేన ప్రసమాప్త్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే తతంగకరకారాధనం కరిష్యే. ఓం ధారాసు సప్త సుసమానశేష సరస్సరిస్య పరిపూరితేషు అపో విగ్రహం ప్రతిపాదయిష్యే గురుణామి దత్తాకం శిశిరకం సుశర్మా. ఇదమాప శివ శుభతమా శాంత శాంతతమా శుభా శుభతమా పూత పూతతమా పుణ్య పుణ్యతమా మేధ్యాం మేధ్యతమా అమృత అమృతరసాః పూత బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూత సూర్యస్య రశ్మిభిః. అస్మిన్ కరకే ఓం ఏతే శతం వృణగే సహస్రం యజ్ఞయా పాశామితతా పురుత్రా తేభ్యో న ఇంద్రస్య పితోత విష్ణుర్విశ్వే దేవా అముంచంత ప్రతస్వస్య. ఓం భూర్భువస్సవః వరుణమావాహయామి ప్రచేతసమావాహయామి రక్తాంబరతరమావాహయామి యాదస్పతిమావాహయామి. వరుణాయ నమః పుష్పేనాసనం పరికల్పయామి సమర్పయామి. వరుణాయ నమః పాద్యమర్గమాచమనీయం సమర్పయామి.
వరుణాయ నమః ఏతే స్నానప్లోతవస్త్రోత్తరీయాభరణోపవీతపుష్పగంధధూపదీపార్ఘ్య నైవేద్య తాంబూలాది సర్వోపచారాः. వరుణాయ నమః భగవాన్ సర్వాత్మకः సప్రేతసుప్రసన్నా వరదా భవంతు. అస్మిన్ కర్మణి నిర్విఘ్నేన పరిసమాప్త్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే. ఓం విశ్వక్సేనం చతుర్బాహుం శంఖచక్ర సమన్వితం సింహాసనే సమాసీనం పీతమాసోగ్నివర్ణకం శ్రీవత్సం బ్రహ్మసూత్రం చ కౌస్తుభం చ వినైవతం జయాపతిం శృంగకేతుం సుపుష్పరథవాహనం పూర్వాషాఢోద్భవం దేవం దక్షిణాముఖమర్చకేత్. ఓం ఆగ్నేయోస్మాద్యజామహే త్వ విశ్వే సదాత్మహితో న సంభో వైరాజంతే సుహతన్నిదత్తాం పరిశామదేశోపదానామనాదహీయామే శస్తాం దనితాం దదాతో. పద్మాకారమండలే ఓం భూర్భువస్సవః విశ్వక్సేనమావాహయామి శాంతమావాహయామి హరమావాహయామి అమితమావాహయామి నిత్యానపాయనమావాహయామి తద్దక్షిణే సూత్రవతేమావాహయామి వామే జయామావాహయామి. సూత్రవతే జయా సహిత శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః. విశ్వక్సేనాయ నమః. పాద్యమర్గమాచమనీయం సమర్పయామి. విశ్వక్సేనాయ నమః. ఏతే స్నానప్లోతవస్త్రోత్తరీయాభరణోపవీతపుష్పగంధధూపదీపార్ఘ్య నైవేద్య తాంబూలాది సర్వోపచారాः. సూత్రపతే జయ సహిత శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః. భగవాన్ సర్వాత్మకः సుప్రీత సప్రసన్నా వరదా భవంతు. సుపుణ్యాహం కరోమి కురుష్వ. స్వస్తి సుప్రోక్షితమస్తు. అస్తు. ప్రజాపత ప్రగతాం ప్రగతాం ప్రజాపతిః శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాని శామ్యంత్వాధీతయః. శుభాని వర్ధంతాం వర్ధతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాని శామ్యంత్వాధీతయః. శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాని శామ్యంతు పాపాని శామ్యంత్వాధీతయః. శుభాని వర్ధంతాం వర్ధతాం శుభాని. ఓం మతో దేవ అవంతు నో గతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తతామభిః ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దదే పదం సమూఢమస్య పాకం సురే. త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారగన్ విష్ణో కర్మాణి పశ్యత గతో వ్రతాని వస్పసే. ఇంద్రస్య యుజ్యస్సకా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః. దివీవ చక్షురాతతం తద్విప్రాసో విపన్యవోజాగ్రవాకం సత్సమింధతే. విష్ణోర్యత్పరమం పదం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవాః. భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్గజత్రాः స్థిరైరంగైः స్తుష్యభాగం శస్తనోభిర్షేమ దేవహితం యదాయుః. శతమిన్ను శరదోంతి దేవాయత్రాణశ్చక్రాజరసन्तనూనాం. పుత్రాసో యత్ర పితరో భవంతి మానో మధ్యారేర్షదాయుర్గంధోః. అదితిర్యోరదితిరంతరిక్షమతిర్మాతా సపితా సపుత్రః. విశ్వే దేవాదితిః పంచజనాదితిర్జాతమదితిర్జనిత్వం. యత్పుణ్యం నక్షత్రం తద్వట్కుర్వేతోపవ్యుషం యదా వై సూర్యపదేతే అథ నక్షత్రం నైతే యావతి తత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్. యత్ర చ కన్యం పశ్యేత్ తావత్ కర్వేదత్కారే స్యాత్ పుణ్యాః ఏవ కురుతే. ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణేస్మిన్ దినే క్రియమాణ సమస్త కర్మసు సర్వోపకరణ ద్రవ్యసిద్ధ్యర్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవద్వ్యసన కర్మణి పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు. పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు. పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు. స్వస్తి నగేంద్రో వృద్రస్రవాః. స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాః. స్వస్తి నస్తార్క్షో అరిష్టనేమిః. స్వస్తి నో బృహస్పతి దదాతు. ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణేస్మిన్ దినే క్రియమాణ సమస్త కర్మసు సర్వోపకరణ ద్రవ్యసిద్ధ్యర్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవతి జనకర్మణి స్వస్తిం భవంతో బ్రువంతో కర్మణి స్వస్తే. స్వస్తిం భవంతో బ్రువంతో కర్మణి స్వస్తే. స్వస్తిం భవంతో బ్రువంతో కర్మణి స్వస్తే. వృద్ధ్యాస్మ హవ్యేర్నమసోపసద్యామిత్రం దీవం మిత్రధిగన్నో అస్తు. అనురాధాన్ హవిషా వర్ధయంతః శతం జీవేమ శరదః సవీరాః. ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణేస్మిన్ దినే క్రియమాణ సమస్త కర్మసు కర్మాభ్యుదగార్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవతి జనకర్మణి అర్ధిం భవంతో బ్రువంతో కర్మరుద్యతాం. అర్ధిం భవంతో బ్రువంతో కర్మరుద్యతాం. అర్ధిం భవంతో బ్రువంతో కర్మరుద్యతాం. వృద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాః సమృద్ధిః ఆపోహిష్టాం యో భువస్థాన భూర్జే దదాతన.
महीरणाय चक्षसे योऽवस्तिपतमवस्य पाजयते हनः उशतिरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षयाय जन्मदा आपो जनगताचनः ॐ पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विदर्शने यः पोतासपनातमा पुनन्तमा देवजनाः पुनन्तमनभौतिकाः पुनन्त विश्व आगवः जातवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनहिम शुक्रेण देवदेद्यत् अग्नि कृत्मा क्रतो गुम्रणु यत्ते पवित्रमक्षिषे अग्नि विततमन्तरा ब्रह्म तेन पुनीमहे उभाव्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागात् यस्य विक्पेस्तनुव वीतपृष्टाः तया मदन्तः सधमाद्येषु वयग्गस्यामुपतगोरगीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापनातो वातः प्राणेनेश्वरो मयो भोः त्यावा पृथिवीपयसापयो बिहेरतापरयज्ञेयमापुनीताम् बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्वभिः अग्नैरक्षये पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पादमानीरध्येते रशभिः समृतकुम्भसं सर्वकं सपोतमश्नादे स्वदितं मातरिश्वना पापमानीर्यो अध्येते रशभिः समृतकुम्भसं तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पापमानी स्वस्तगणैः सुतगाहि पयस्वते ऋषिभिः समृतो रसः ब्राह्मणे सुमृतकं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमं कामान् समद्धयन्तु नः देवैर्देवै समाभृताः पावमानी स्वस्तगणैः सुतगाहि कृतुश्चतः ऋषभिः समृतो रसः ब्राह्मणे सुमृतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहेन्द्रस्य नीते सहमा पुनातो सोमस्वस्यावरणसमीक्षा यमो राजा प्रमणावि पुनातमा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातो तच्छं यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगात भेषजं शन्नो अस्तद्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्यां दिशि देवार्पितो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि मातावतरो मार्जयन्तां प्रते एच्छां दिशि घृपसवो मार्जयन्तां रे एच्छां दिश्यापवोषतयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वागां दिशग्नत्संवत्सरविघ्नपतिर्मार्जयन्ताम् अधोदरादरैनागे एभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहाग्यान् निहितोऽस्य जन्तोः समक्रतं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताक्षिष समिदः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशगान् निहिता सप्त सप्ताः अतः समुद्रागिरयश्च सर्वेऽस्मात् सिन्धन्ति सिन्धवत् सर्वरूपाः अतस्य विश्वाभूषदगोरसाश्चयेनेश भूतश्चित्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवे कवीनां ऋषिर्विप्राणां महितो मृगाणां शेनो क्रुद्धा नागस्पति तिर्वरा नागस्सोमः पवित्रमत्येतिरे भन्ने अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां भक्तिं प्रजां जनयन्तीगं स्वरूपाम् अजोक्येको जशमानो निषेते जहोत्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्गाचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्धं क्षेमाय पुनरागमनाय च கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாசனத்தை தொடர்ந்து திருமுலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். பக்தர்களே, தினந்தோறும் நடைபெறும் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருப்பது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். திருப்பாவையும் திருவேங்கடமுடையானும் என்று ஒரு நிகழ்வு, அதாவது மார்கழி மாதம்தான் பிறக்கப் போகிறது. அந்த மார்கழியிலே தான் பிராட்டியான ஆண்டாள் சூடி கொடுத்த நாச்சியார் என்று கூறப்படும்
அந்த ஆண்டாள் 30 பாசுரங்களை எழுதி அதிலே பகவானுடைய சாங்கத்தியத்திலே அந்த திருப்பாவையை பாடுகிறார்கள். அப்பொழுது அந்த மார்கழி மாதம் பிறக்கப் போகிறது என்ற மகாபாரத யுத்தம் மார்கழி மாதத்தில் தான் நடைபெற்றது. திருப்பார்கடல் கடையப்பட்டதும் அந்த மாதத்தில்தான். இந்திரனால் பெருமழை வெள்ளம் உருவாக்கப்பட்ட பொழுது கிருஷ்ணர் கோவர்தனகிரியை கொடையாக பிடித்து கோகுலத்து மக்களை காப்பாற்றியதும் அந்த மாதத்தில்தான். அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்தது அந்த மார்கழி மாதம். பகவான் கீதையில் தான் மாதங்களில் மார்கழி மாதமாக இருக்கிறேன் என்றும் மாசானாம் மார்கசீர்ஷாகம் என்று கூறப்படுகிறது. அப்படி கீதையிலே தனக்கு மிகவும் பிடித்த மாதம் மார்கழி என்று சொல்லியதை கோதை கெட்டியாக பிடித்துக்கொண்டு தன்னுடைய முதல் பிரபந்தமான திருப்பாவையை மார்கழி என்கின்ற வார்த்தையில் தொடங்குகிறாள் அந்த திருப்பாவை பாடிய ஆண்டாள். அப்படி திருப்பாவை அவதரித்த பிறகு வைஷ்ணவ மரபிலே மார்கழி மாதத்தை மார்கழி மாதம் என்று சொல்லும் வழக்கம் மாறி திருப்பாவை மாதம் என்று மாற்றியதாம். அப்படி திருமலை அப்பனுக்கு மார்கழி மாதம் முழுவதுமே சுப்பிரபாதத்திற்கு பதிலாக ஆண்டாளின் திருப்பாவையைத்தான் சேவிக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த திருப்பாவையிலே பெருமாளை சேவிக்கும் நாம் இதோ இப்பொழுது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்திலே திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்திலே நவதானியங்களை மண்பால்களிலே சேர்த்து திருத்துழாய் அக்ஷதை போன்றவைகளால் பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. மற்றும் தேவதைகளை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியமே இந்த அங்குரார்ப்பணம். பக்தர்களே, திருமலை அப்பனை செவிக்கலாம். அவனுடைய திருவடிகளை சரணாகதி செய்து ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய மலையப்ப சுவாமியே கோவிந்தா என்று கூறலாம். இன்று அஸ்தம் நட்சத்திரம் ஆகையால் கஜேந்திர மோட்சத்தை நினைவு கூறுகிறது. ஏனென்றால் அந்த கஜேந்திரனுக்கு மோட்சத்தை அளித்தவன் திருவேங்கடமுடையான். இதோ அப்படிப்பட்ட திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ரக்ஷா பூஜையை சேவிப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. அந்த ரக்ஷைகளுக்கு முறையே நாகராஜனை ஆவாகனம் செய்து ஜெயா சூத்ரவதி என்னும் கயிற்றிற்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. शेषाय नमः. एते स्नानप्लोतवस्त्रोत्तरीयाभरणोपवीतपुष्पगन्धधूपदीपार्घ्यनैवेद्यताम्बूलादे सर्वोपचाराः शेषाय नमः. भगवान् सर्वात्मकः सुप्रीत सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु. हरिः ओं. स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगस्वस्ति देव्यतिथिरनर्वणः. स्वस्ति पूषामसुरो ददातन. स्वस्ति द्यावा प्रतिभेषु चेतना. स्वस्तगे वायुमुपप्रभामहे सोमं. स्वस्ति भुवनस्य स्वस्तिः बृहस्पतिं सर्वगणं. स्वस्तगे स्वस्तिग आदित्यासो भवन्तु नः. विश्वे देवानो अद्य स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तगे देवा अवन्तृपवस्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रपात्वं हसः. स्वस्ति मित्रावरणा स्वस्ति पद्येरेवते. स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो दिते कृते. स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददताग्नता जानता सङ्गमे मही. स्वस्तिगणं तार्क्षमरिष्टनेमि महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नामिन्द्रासकं समर्च बृहद्यशो नवमिवर्हेमा. अम्भोमुचमाङ्गीरसङ्गयञ्च स्वस्त्यात्रे मनसा शतार्क्षम् प्रगतपानिशरणं प्रपद्ये. स्वस्य सम्पादे स्वभयन्नो अस्तु. ध्रुवन्ते राजवर्णो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः. ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं. शुभगं शुभम्. ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்து ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். அந்த ரக்ஷா பந்தனம் என்பது காப்பு கட்டுதல் என்றும் பெயர். ஆகவே எம்பெருமானுடைய திருக்கரத்திற்கும் பிராட்டிமார்களுடைய திருக்கரங்களுக்கும் இந்த ரக்ஷையை அணிவிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிக்கலாம் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை. அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது என்று கூறுவார்கள். அப்படி புல்லிலிருந்து படிப்படியாக கடைத்தேறி உயர்வான மனித பிறவியை எடுத்துள்ளோம். கிடைக்குமோ இந்த அரிய மானிட ஜென்மம் என்பது?
அவ்வாறு கிடைத்த இந்த மனித பிறவி ஆகிய நாம் நற்செயல்களை செய்தும் பகவானை வழிபட்டும் தெய்வ நிலைக்கு உயர வேண்டும், மோட்சம் பெற வேண்டும். பாவங்களை செய்து நரகத்தினை அடையாமல் மனித பிறவி எடுத்ததற்கு முடவனாய் பிறந்தாலும் பரவாயில்லை, முகுந்தனை நினைத்து மோட்சம் பெறலாம். உடல் குறை உள்ளவர்கள் கூட பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்தால் மனதாலும் உள்ளத்தாலும் மோட்சம் பெறலாம். மனித பிறவியானது மாயையில் அகப்பட்டு கொண்டு காலத்தினை வீணாக்கி கொண்டிருக்கிறது. அதனை நாம் அமிர்தம் பெற நினைக்கலாமா? மாயையிலிருந்து விடுபட ஒரே வழி நமோ நாராயணா, கிருஷ்ணா, முகுந்தா, ஸ்ரீரங்கா என்று ஏழுமலையானை நினைத்தால் சுகமாக வாழலாம். அப்படிப்பட்ட அந்த வைகுந்தநாதனுக்கு இதோ திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய் விளங்கும் மலையப்ப சுவாமிக்கு அர்க்யம், பாத்தியம், ஆச்சமன்யம் முதலிய உபச்சாரங்கள் சமர்ப்பித்து இதோ அந்த ரக்ஷையை அணிவிக்க உள்ளார். அதேபோல் பெருமாளை நினைக்கும் பொழுது இன்று புதன்கிழமை ஆதலால் நாராயணனை நினைக்க வேண்டும் என்றும் அந்த நாராயணனுக்கு 1000 நாமங்கள், அந்த 1000 நாமங்களிலேதான் அவனை நாம் செவிக்கிறோம். அப்படி செவிக்கும் பொழுது கஜேந்திர மோட்சத்தை அளித்த அந்த வரதனுக்கு இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். 1000 ஆண்டுகள் முதலையோடும், அதாவது முதலைக்கு நீரிலே இருந்தால் பலம், யானைக்கு வெளியில் இருந்தால் பலம். அப்படி பெருமாளை நினைத்து அவரை சேவிக்க ஒரு தாமரை புஷ்பத்தை மடுவிலே இருந்து பறித்து வர சென்ற பொழுது எதேச்சையாக முதலையின் வாய்க்கு அந்த யானையின் கால் அகப்பட்டு விடாமுயற்சி செய்தும் சுமார் 1000 ஆண்டுகள் காலம் அந்த யுத்தம் நடைபெற்று தன்னால் முடியவில்லை என்ற பொழுது ஆபத் பாந்தவா, அநாதரக்ஷகா, ஆதி மூலமே என்று அந்த கஜேந்திரன் அழைக்க பிராட்டியான தாயார் அந்த எம்பெருமானை கருட வாகனத்திலே அமர்த்தி வைகுந்தத்திலிருந்து புறப்படச் செய்தாளாம். அப்படி வந்து கஜேந்திரனுக்கு மோட்சத்தையும் அந்த முதலைக்கும் மோட்சத்தையும் கொடுத்தவர்தான் அந்த ஆபத் பாந்தவன். அவருக்கு ரக்ஷையை அணிவித்த அர்ச்சக சுவாமி இதோ பிராட்டிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். அதாவது இந்த ரக்ஷாபந்தனம் என்பது எதற்காக என்றால் பகவானுடைய கைங்கரியங்களிலே அல்லது பிராட்டிமார்களுடைய கைங்கரியங்களிலே மனதை ஏகாகிரதம், அதாவது ஒரு முறையாக வைத்து அந்த பகவானையும் பிராட்டிமார்களையும் சேவிக்க வேண்டும். அப்படி சேவிக்கும் பொழுது அவர்கள் கூட கையிலே கங்கணத்தை கட்டிக்கொண்டு அந்த பக்தர்களை ரட்சிப்பார்களாம். அதனால் தான் ரக்ஷாபந்தனம், அதாவது பக்தர்களை ரட்சிக்கும் பொருட்டு பிராட்டிமார்களுக்கும் பகவானுக்கும் அந்த ரக்ஷையை அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்கள் அந்த எம்பெருமானுக்கு சளைத்தவர்களா என்ன? அவனுடைய வக்ஷஸ்தலத்திலே நிரந்தரமாக குடிகொண்டிருக்கும் ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்றும் தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்றும் பிராட்டிமார்கள் இருவருக்கும் ரக்ஷையை அணிவிக்க உள்ளார். ஸ்ரீதேவி பிராட்டியினுடைய இடது கரத்திலே ரக்ஷையை அணிவிக்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த எம்பெருமானுடைய வக்ஷஸ்தலத்திலே நிரந்தரமாக குடிகொண்டிருக்கும் அனபாயினிகள், வக்ஷஸ்தல நாயகிகள் என்று அழைக்கப்படும் இவர்களுக்கு அர்ச்சக சுவாமி ரக்ஷையை அணிவித்தார். அடுத்து மற்றொரு பிராட்டியான பூமி பிராட்டிக்கும் ரக்ஷை அணிவிக்க உள்ளார். எம்பெருமான் தான் வாத்சல்ய ஸ்வரூபனா? அல்ல, நாங்களும் சளைத்தவர்கள் அல்ல. ஒரு பக்தன் தவறு செய்து விட்டால் அதை மன்னித்து மறந்து பெருமாளிடம் அந்த பக்தனுக்காக பரிந்து பேசுபவர்கள் இந்த பிராட்டிமார்கள். அப்படிப்பட்ட பிராட்டிமார்களுக்கு இதோ ரக்ஷை அணிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். பூமி பிராட்டிக்கு ரக்ஷை அணிவிக்கிறார். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. ஆக
ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு ரக்ஷையை அணிவித்து அடுத்து எம்பெருமானை செவித்துக் கொண்டு அந்த எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ ஆத்ம ரக்ஷைக்காக அர்ச்சக சுவாமியும் தன்னுடைய கருத்திலே ரக்ஷை அணிகிறார். அதைத் தொடர்ந்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை நாம் சேவிக்க உள்ளோம். அக்னியை ஆவாகனம் செய்து அந்த ஹோமத்தை செய்த பிறகு இறுதியிலே பூர்ணாகூத்தியுடன் லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமத்தை முடிக்கிறார். சேவிப்போம் அடுத்ததாக அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோம கைங்கரியத்தை. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலையிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவித்துக் கொண்டிருக்கும் பக்தர்களுக்கு கூட இந்த பகவானுடைய கருணா கட்டாட்சம் கிடைக்க வேண்டி சேவிக்கலாம். யக்ஞரக்ஷக கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலையப்பனே வெங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா. शुद्धैरुक्तैर्वारुद्धांसं शुद्ध आसेर्वान् ममत्तो इन्द्रशुद्धो न आगः शुद्धः शुद्धहिरुतुभिः शुद्धो रगिं निदारगशुद्धो ममद्दि सौम्यः इन्द्रशुद्धो हिनो रगिं शुद्धो रत्नानि दाशसे शुद्धो वृत्राणि जग्नसे शुद्धो वाजं शिशाससे स्तण्डिले भूमिमावाहयामि मयि देवा ओम जातवेदो भुवनस्सरेतभिसंचतपसो यज्ञनिश्चिते अग्निमश्वत्तादते हव्यवाहकं शमीगर्भाजनयो घृतप्रतीको घृतयोनिरग्नि घृतैस्तमिद्धो घृतमस्यान्नं घृतप्रशस्वा सरितो वहन्ते घृतं पिबञ्च यजायक्षि देवान् आयुर्दा अग्ने हविशोजशानो घृतप्रतीको घृतयोनिरेध्ये घृतं पीत्वा मधुचारगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमम् ओम अग्ने आयाहि वितगे गृणानो हव्यदातगे निहोदा जत्से बर्हिषे अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसवितप्रसवा ओम तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं पतमं पुरस्ताद् विसेमतश्रुचो वेन आवह सवुद्निगा उपमा सविष्टा शतश्च गौनमसतश्च विवः ओम भूर्भुवस्वः ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदद्यकं सपेकं प्रतिश्रवणं यददास तस्मै ओम भूः सोममावाहयामि ओम भवर्यज्ञागमावाहयामि ओम सुवरेन्द्रमावाहयामि ओम भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमाय प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवता वर्धयित्वं नाकस्य पृष्ठे जमानो अस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमजमानं च देः ओम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवता वर्धयित्वं नाकस्य पृष्ठे जमानो अस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमजमानं च देः ओम प्रोक्ष पात्रादावामादागा कृष्णो अग्नगे त्वा स्वाहा वेदिरसे बर्हिषे त्वा स्वाहा बर्हिरसे सग्वस्त्वा स्वाहा दिवे त्वा अंतरिक्षा गत्वा पृथिव्ये त्वा कोसा गत्वा स्तोपोसे पश्चिमतः सौदत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तोपोसे ओम विष्णुमावाहयामि ओम महाविष्णुमावाहयामि ओम सदा विष्णुमावाहयामि ओम यापिनारायणमावाहयामि श्रुतासे घृतासे ध्रुवासे दरुणासे वनस्पत्योसे देवेभ्यः सन्दस्वा अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि ओम ब्रह्मणप्रणीष्यामि समानपातं यच्छामि अस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमजमानं च देः ओम प्रणग
नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षेनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमिजमानं च देहे ॐ प्रणय को वप्रणयतो घृतं व्यहरामि चरं व्यहरामि दक्षिणप्रणितो ब्राह्मेण तीर्देन ॐ प्रजापतिमावाहयामि ॐ इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणितो दैवेन तीर्देन अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपौपस्पृश्य ॐ श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषाणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदैवतसोमावाहयामि औपासनज्ञमावाहयामि यज्ञदेवस्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतये जुष्टन्निर्वपामि इन्द्राय जुष्टन्निर्वपामि अग्नये जुष्टन्निर्वपामि सोमाय जुष्टन्निर्वपामि अग्नये जुष्टन्निर्वपामि सोमाय जुष्टन्निर्वपामि अग्निशोमाभ्यागं जुष्टन्निर्वपामि प्रजापतये जुष्टन्निर्वपामि ब्रह्मणे जुष्टन्निर्वपामि इन्द्राय जुष्टन्निर्वपामि वसुभ्यो जुष्टन्निर्वपामि मरुद्भ्यो जुष्टन्निर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टन्निर्वपामि अपोपस्पृश्य ओम श्री विष्णवे जुष्टन्निर्वपामि बृहस्पतये जुष्टन्निर्वपामि मित्राय जुष्टन्निर्वपामि वरुणाय जुष्टन्निर्वपामि आदित्येभ्यो जुष्टन्निर्वपामि अश्विभ्यां जुष्टन्निर्वपामि पूष्णे जुष्टन्निर्वपामि कक्षाय जुष्टन्निर्वपामि कक्षदैवतसोमाय जुष्टन्निर्वपामि औपासनज्ञाय जुष्टन्निर्वपामि यज्ञदेवस्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टन्निर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टन्निर्वपामि आज्यं तृप्यदुस्रगामि चरुं तृप्यदुस्रगामि अग्नेज्योतिरसे समिते स्वाहा चित्पति स्वापनात्पच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मि विस्वाहा वाक्पति स्वापनात्पच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मि विस्वाहा देवस्वा सविता पुनात्पच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मि विस्वाहा करसम्पूर्णा वा समितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां अभ्यर्चा अक्षताम् आज्ञां चरभिः ओम वायुवे नमः ओम ईशानाय नमः ओम अग्नये नमः ओम जातवेदसे नमः ओम सहोजसे नमः ओम वज्राभ्रभवे नमः ओम नर्याधसे नमः ओम पंक्तिराधसे नमः ओम विसर्पिने नमः ओम अग्निपुरुषाय नमः सरस्वते नमः देवसवितप्रसभा ओम अयंत यद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्व वर्धस्वतेर्दवर्धगचास्मान् प्रजगा प्रसभिः ब्रह्मवर्त्यसे नान्नाद्येन समेदगा अस्मिन्नाघार कर्मणि ब्रह्मं सोममिद्ममाधास्ते आधस्वा समेदग स्वाहा आघार मुहूर्तस्मुहूर्तोस्पते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो वायव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादेशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदैवतसोमाय स्वाहा औपासनज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवस्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्ग्या चर्गं सावित्राद्भिर्गृहीत्वा पुनरभिगार्ग्या ओम भो स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वतेन्वमग्गस्ताः देवसविता प्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणश श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि औपासनाग्नौ कृता आघारान्ते स्वरमन्त्रतन्त्र श्रुति विपर्यास योनातिरिक्त सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषड्वैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवित प्रसवा ओम मतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्यां सप्तताम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदे पदं समोढमस्य
त्र्यम्बकाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यत गतो व्रतानि वस्वसे इन्द्रस्य युज्यस्सका स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सुरगः दिवेव चक्षुरादतग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागं सत्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा वगुं सवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्द्रमग्रस्ताः हनुमतेन्द्रमग्रस्ताः सरस्वतेन्द्रमग्रस्ताः देवसविता प्रासावेः అప్సరో గణము ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము ఆడరో పాడరో అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమిసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమిసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము లక్ష్మీ విభుని పెండ్లికి వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికి వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొననిచ్చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొననిచ్చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము నమామ్యహం శ్రీ వెంకటశైలనాయకం నారాయణం సకమలం సకలామరేంద్రం వైఖానసం మమ గురుం నిగమాగమేంద్రం భృగ్భత్రికశ్యపమరీచి ముఖాన్ మునీంద్రాన్ సర్వానహం కులగురుం ప్రణమామి మూర్ధా
अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्य परिमितशक्त्याभ्यगमानस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममानानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे पृथिव्यप्तेज वायव्याकाशहङ्कार महदव्यक्ताख्य सप्तावरणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्त अष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सपर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफनामनिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रदैकाख्य अष्टदिग्दन्ति सुण्डान् दण्डोत्तम्पिते अमरावती तेजोवते संयमने रक्षोवते सिन्धुमते गन्धवत्यलकावते यशोवते त्यष्टदेव परिव्राजते इंद्राग्नियमनिरते वर्णवायु कुबेरेशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोका लोकाचल बलगिते जंबू प्लक्ष कुश क्रोंच शाकशाल मलि पुष्कराख्य सप्तद्वीपदीपिते महेन्द्रमलय सख्य सुक्ति अदृक्षवद्विन्द्य पार्यात्राख्य सप्तकुल पर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हारीलावृत भद्राश्व केतुमाला हिरण्यकरमणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इंद्रकसेरु ताम्रगवस्ति पुन्नाक गंधर्व सौम्यवर्णवर्ताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बोद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्म भूमौ अवंती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखाया पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले कृष्णा कावेर्योः मध्यप्रदेशे वीरोर् दक्षिण दिग्भागे सत्यव्रत क्षेत्रे सकल देवता सन्निधौ सकल जगत्सृष्टुः परार्धद्वयजीविनो ब्रह्मणो द्वितीय पार्धे प्रथम वर्षे प्रथम पक्षे प्रथमेहनि द्वितीयगामे त्रयोदश घटिका द्विचत्वारिंशत् द्विघटिकासु गतासु तृतीय मुहूर्ते प्रथम प्राणायाम काले पुरुहूतनामधिगेन्द्र समगे पार्थिव कूर्म प्रलगानंत श्वेतवराह ब्रह्म सावित्राख्य सप्तकल्पानां मध्ये पंचमे श्वेतवराह कल्पे स्वायंभुव स्वारोचिषोत्तम तामसरैवत चाक्षुष वैवस्वत सूर्यसावर्णी धर्मसावर्णी दक्षसावर्णी रुद्रसावर्णी ब्रह्मसावर्णी इंद्रसावर्णी वेदसावर्णाख्य चतुर्दश मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे तत्रैक सप्तति महायुगानां सप्तविंशति महायुगेष्वतीतेषु तदुपर्यष्टाविंशतिमे महायुगे अष्टाविंशति सहस्रान्वित सप्तदशलक्षाब्दे कृतयुगे गाते षण्डवते सहस्रान्वित द्वादशलक्षाब्दे त्रेतायुगे गाते चतुष्षष्टि सहस्रान्वित अष्टलक्षाब्दे द्वापरयुगे गाते द्वात्रिंशत्सहस्रान्वित चातुर्लक्षाब्दे वर्तमाने कलियुगे प्रथमपादे युधिष्ठिर विक्रमार्क शालिवाहन विजयाभिनंदन नागार्जुन कल्कि भूपाख्य षट्छकानां मध्ये तृतीये शालिवाहन शके अस्मिन् देश वर्तमान व्यवहारिक चांद्रमाने प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभ मुहूर्ते मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतत् क्षणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशापरेषां मद्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां च कुम्भीपाकलोहित धामातपसंगात कालसूत्रादे विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैः सूर्यमण्डल पर्यन्तं कृतनासेर्वर्ष सहस्रावसाने एकैक तिलापकर्षण क्रमेण सर्वनाश्यपकर्षण सम्मतिकाले श्रीहरिलोके निवास सिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरिक अश्वमेधादे शतकृत पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्य लोकेषु सालोक्य सारोप्य सामीज्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्षफल सिद्ध्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीगपते पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमलीलासमेतस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य एतत् शेषाचलनिवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः परव्योह विभव अंतर्गामी अर्चा स्वरूप रूप गुण विभवैश्वर्यादि निरूपक श्री विखनो मुनींद मतानुसारिभिर्भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्वशिष्टादिभिर्दिव्य महर्षिरुक्ता
గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్త్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య నందక కౌమోదకీ సారంగ దివ్య పంచాయుధాలంకృత కోటి సూర్య సమప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస భగవచ్శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగేరస పారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవణాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ భేదేన ప్రవర్తమానస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపకస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగేరస పారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవణాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ స్వకర్మణోప్యాది వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితి లయ కారణస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయాం ఆంగేరస వనస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవణాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుట మకుటమనికిరణ విజృంభిత పాదారవిందస్య అర్చావతార భగవత ప్రద్యుమ్నావతారకస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయాం ఆంగేరస పారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవణాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటకటక కేయూరహార దివ్యాభరణ భూషితాయ శ్రీవత్సాంకిత వక్షస్థాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యమాల్యోపేత శోభితాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ ప్రపన్న పారిజాతాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ నిజావతారాయ అచింత్యాద్భుత నిత్య యవ్వన స్వభావ లావణ్య తేజో దివ్య రూపకాయ అఖిల శాఖాద్యాగినో అఖిల లోక పవిత్ర రూపాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాశౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ. ఋగ్యజ సామధర్వణజ్ఞ సూత్రోద్భవస్య చతుర్వేద శాఖాధ్యాయనీం భార్గవచవనాప్నవాన్ ఔర్వవేదల పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవేం సర్వాలంకారవతేం సకల సురాంగణా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనంద గుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం భృగో సంకల్పతనయాం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యా రాశౌ జాతాం అయోనిజాం శ్రీదేవే నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీమహే దాస్యామి. ఋగ్యజ సామధర్వణజ్ఞ సూత్రోద్భవస్య చతుర్వేద శాఖాధ్యాయనీం కాశ్యపవత్సారణైధ్రువత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవేం సర్వాలంకారవతేం సకల సురాంగణా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరేం అత్యంత సౌందర్యవతేం బహుశ్యామలాంగీం కశ్యప సంకల్పతనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాశౌ జాతాం అయోనిజాం భూదేవే నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీమహే దాస్యామి. కన్యాదాన ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్మితే భవంతో మహాంతోను గృహ్ణంతో కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకదికేశగా కన్యాం స్వలంకృతాం సాధ్వీం సుసేనాగ సుమేధసే ప్రగతోహం ప్రగచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే. విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణ్యా సర్వా దేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రణాత కమలాపతిః. வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரைப்பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம், கன்னியாதானம் ஆகிய கைங்கரியங்களை சேவித்துக்கொண்டு இதோ இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்க உள்ளோம். மாங்கல்ய பூஜை என்பது அந்த பிராட்டிமார்களுக்கு அணிவிக்க வேண்டிய மாங்கல்யங்களுக்கு அர்ச்சக சுவாமி முறையே பூஜை செய்கிறார். அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்த ஜலத்தால் அலம்பி அதற்கு மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு புஷ்பங்களாலும் அக்ஷதைகளாலும் பூஜை செய்ய உள்ளார்.
அர்ச்சக சுவாமி. அதாவது ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட தலங்கள் ஏராளம். அந்த 108 திவ்ய தேசங்களிலே ஒரு திவ்ய தேசம்தான் திருமலை என்று. அந்த திருமலையை அனைத்து ஆழ்வார்களும் போற்றினார்கள். பெரிய ஆழ்வாரும் சரி, மற்ற ஆழ்வார்களும் சரி, விசேஷமாக எம்பெருமானை குறித்து பாடினார்கள். எம்பெருமானுக்கு எத்தனையோ பெயர்கள் மங்களாசாசனம் செய்திருந்தாலும், ஐயோ எம்பெருமானுக்கு என்னாகுமோ இந்த இருள் தருமா ஞாலத்திலே என்று வயிறு பிடித்து பரிவிஞ்ச பல்லாண்டு பாடியவர் பெரியாழ்வார். விஷ்ணு சித்தரான அவர் இந்த பொங்கும் பரிவாலே பெற்றார் பெரியாழ்வார் என்ற பெயர் என்பார் உபதேச ரத்ன மாலையில் சுவாமி மணவாள மாமுனிகள். அதேபோல் திருப்பல்லாண்டுக்கும் திருப்பாவைக்கும் வைஷ்ணவ மரபிலே ஒரு தனி ஏற்றம் உண்டு. இரண்டும் இல்லாது தினசரி வழிபாடும் நிறைவு பெறாது. ஆகவே பெரியாழ்வாருடைய திருநாமம் விஷ்ணு சித்தர். இதுவும் காரண பெயர்தான். விஷ்ணுவை சதா சர்வ காலமும் தன் சித்தத்திலே வைத்து போற்றுபவர் என்பதால் தான் இந்த திருநாமம். பகவான் விஷ்ணுவின் சித்தத்தில் சதா இவர் இருப்பதால் விஷ்ணு சித்தர் என்றும் அழைப்பார்கள். காரணம், என்னையே நினைக்கும் பக்தன் என்னுடைய உயிருக்கு நிகரானவன் என்று கீதையிலே கிருஷ்ண பரமாத்மா கூறியிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட சிறப்புகளை பெற்ற பெரியாழ்வார் விசேஷமாக சுவாதி நட்சத்திரத்திலே ஆனி மாதம் கருடாத்மாவாகி கருடனுடைய அம்சமாக ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே அவதரித்தார். இவர் பகவானுக்கு செய்த தொண்டு 2 பிரிவாக அமைந்தது. ஒன்று பாமாலை சூட்டினார், 2வது பூமாலையும் சூட்டினார். இதில் மகிழ்ந்த பூதேவி நாச்சியார் தனது வைகுந்தவான் போகத்தை துச்சமென எண்ணி பெரிய ஆழ்வாரின் திருமகளாய் அடிப்பூரத்திலே ஆண்டாளாக அவர் நந்தவனத்திலே அவதரித்தார். கோதை என்ற பெயரால் வளர்த்து கோதை என்னும் மாலை என்று கோதை என்றால் மாலை என்று பொருளுண்டு. பூமாலையோடும் பாமாலையோடும் சேர்த்து கோதையையும் பகவானுக்கு கொடுத்து பகவானுக்கே மாமனாராகினார். அதனால்தான் அவருக்கு பெரியாழ்வார் என்ற நாமமும் உண்டு. அப்படி பெரியாழ்வார்கள் மங்களாசாசனம் செய்த அந்த பகவானுக்கு இதோ திருமலை அப்பனுக்கு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த பாண்டிய மன்னனின் சந்தேகங்களை தீர்க்க எண்ணி யார் பரதத்துவம் என்ற கேள்விக்கு வேதாந்தங்களை எல்லாம் வடிகட்டி சாறு பிழிந்து நிர்ணயம் செய்து கொடுத்ததால் வேதபிரான் பட்டர் என்றே அழைக்கப்பட்டார். வேண்டிய வேதங்களை ஓதி விரைந்து கீழருந்தான் பாதங்கள் யாமுடைய பற்று என்று அந்த நிகழ்ச்சியில் அவர் கூறுகிறார். எப்படி என்றால் திருப்பல்லாண்டு தனியன் எடுத்து கூறுமாம். இதில் வேண்டிய வேதங்கள் என்பதற்கு 2 பொருள்கள். வேண்டிய என்றால் தேவைப்படுகின்ற என்றும், பரமாத்மா நிரூபணத்திற்கு வேதத்தின் எந்தெந்த பாகங்கள் தேவைப்படுகின்றனவோ அந்த பகுதிகளை எல்லாம் எடுத்துரைத்து நிரூபித்து காட்டினார் என்று பொருள். இன்னொரு அதிசயமான பொருளும் உண்டு. அதாவது இதற்கு முன்பு இருந்தோர் வேதங்களுக்கு தவறான பொருள் நிர்ணயித்து குழப்பவாதம் செய்து வேதங்களுக்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அதனால் வேதங்கள் வருந்தினவாம். வருந்தி பொலிவிழந்த வேதங்கள் பட்டர் பிரானான இவரிடம் சரியான பொருள் சொல்லி மீட்டெடுத்து உதவ வேண்டும் என்று வேண்டியதாம். அவ்வாறு வேண்டிய வேதங்களை சரியான அர்த்தத்தில் எடுத்துரைத்து பரதத்துவ நிர்ணயம் செய்தார் பெரியாழ்வார் என்று ஒரு நயமான பொருளும் உண்டு. இவர் 2 பிரபந்தங்களை பாடினார். ஒன்று திருப்பல்லாண்டு, ஓங்காரத்தின் அதாவது பிரணவத்தின் அர்த்தமாக இது விளங்குகிறது. 2வது பெரியாழ்வார் திருமொழி. அதில் முதல் பகுதி கண்ணன் மீது பாடிய பிள்ளைத்தமிழ். இந்த பிள்ளைத்தமிழ் என்பது தமிழ் இலக்கியத்திலே வழங்கும் பிரபந்த நூல் வகைகளும் உண்டு. அப்படி 3 மாதம் கழித்து முதல் 21 மாதம் வரையிலான அந்த குழந்தையின் வாழ்க்கை காலத்தை 10 பருவங்களாக பிரித்து காண்பார்கள். ஒவ்வொரு பருவத்திற்கும் 10 பாடல்கள் வீதம் அமைத்து பாடப்படுவது வழக்கு. ஆண்பார் பிள்ளைத்தமிழ்,
காப்பு, செங்கீரை, தாள், சப்பானி, முத்தம், வருகை, அம்புலி, சிற்றில், இருபறை, சிறுபறை, சிறுத்தேர் என்னும் 10 பருவங்களை உடையது. சாற்றிய காப்பத்தால் செங்கீரை சப்பானி மாற்றார் அறிய, முத்தமே வாரானை போற்றறிய, அம்புலியே யாய்த்த, சிறுபறையே சிற்றிலம்பு, சிறு தேரோடும் 10 என்கிறது வெண்பா பாட்டியல். அப்படி அந்த பகவானை பண்பாட்டு தமிழ் பண்பாட்டிலே முதல் திங்கள் குழந்தையை வெளிக்கொண்டு வர மாட்டார்கள். எனவே அந்த பகவானை அப்பொழுதெல்லாம் சேவிப்பதற்கு விடமாட்டார்களாம். இப்படி பிரபந்தத்தின் முன்னேற்றமாக பெரியாழ்வாரை பார்க்கலாம். ఓం ప్రజాపతిస్తోమకం రాజానమసృజత తంత్రగో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అతః సీతా సావిత్రే మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షక హేతునాం కంఠే బధ్నామి శబగే రక్షంతు శరదాం శతం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణం కరోమి. ఓం ప్రజాపతిస్తోమకం రాజానమసృజత తంత్రగో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అతః సీతా సావిత్రే మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షక హేతునాం కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షంతు శరదాం శతం. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణం కరోమి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్ ముహూర్తోస్మితే భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతో సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. అటువంటి వైభవముల మన చేసిన
सर्वेभ्यः प्रजामस्येनेतु दीर्घमायुः अशोन्योपस्ताजीवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमपि प्रपद्यतां यज्ञस्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविता अस्य देवदेवस्य भगवतो नरगणेश श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्निमुखे लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसवा इमान् लाजामावित्यभिघार्या ओम इमान् लाजान्नवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च सम्मननान् सदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्गवब्रोदे अग्नौ लाजान्नववन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेद्धन्ताम् नातगो मम स्वाहा ओम इमान् लाजान्नवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च सम्मननान् स्तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्गवब्रोदे अग्नौ लाजान्नववन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेद्धन्ताम् ज्ञातगो मम स्वाहा ओम इमान् लाजान्नवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च सम्मननान् स्तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्गवब्रोदे अग्नौ लाजान्नववन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेद्धन्ताम् ज्ञातगो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविता प्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नरगणेश श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवे औपासनाग्नौ कृतलाजहोमान्ते स्वरमन्त्रतन्त्र श्रुतिविपर्यासन्यूनातिरिक्त सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषड्वैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसवा ॐ मतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्यां सप्तदानपि स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदते पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतु गतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सुरगः दिवीव चक्षुरादतग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवागं सत्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविता प्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नरगणेश श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्नौ कृत सर्वहोमान्ते एतत् कर्मसाद्गुण्यार्थम् उपरिष्टात् अन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसवा यतस्य कर्मणोत्यरेचं यद्वान् नमः कर्म अग्निष्टत्विष्टकृत् विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सोहतं करोतु मे स्वाहा अग्नगे स्विष्टकृते सोहतहोताहुतीनां कामानागं समर्देत्रे स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादाय स्वाहा अग्नगेन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मे स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दा भूतग्निस्तत्पुनराः जातवेदवचर्षणे स्वाहा
पुनरग्निः चक्षुरदात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनागनं चक्षुरादत्तमक्षौ स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनिष्ठेभ्यः स्वाहा भेषजं जुरिष्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा दैवीभ्यः स्वाहा धनुभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽसे ऋषिमहि स्वाहा समिदसे तेजोसे तेजोमेधि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोद्धीमहि बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा ओम सप्तते अग्ने समिद सप्त जिह्मा सप्तऋष सप्तधाम प्रिकानि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा गजन्ते सप्तगनिरापूर्णस्वाकृते स्वाहा अग्निर्भक्त गस्वाहा वेदिर्भक्त गस्वाहा द्योर्भक्त गस्वाहा पृथिवीर्भक्त गस्वाहा ओषधि वनस्पति गंधर्वाप्सरश्चैव भक्त गस्वाहा अग्निजन्य गस्वाहा वेदिर्जन्य गस्वाहा द्योर्जन्य गस्वाहा पृथिवीजन्य गस्वाहा ओषधि वनस्पति गंधर्वाप्सरश्चैव जन्य गस्वाहा समन्तां बर्हिर्हविषाकृतेन समादित्यैर्वसुभिः समरुद्भिः पूर्णाहुतुमुत्तमान्ते आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णाहुति मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्मिते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरश्चैव तृप्यन्ताम् अदितेन्द्रमग्रस्ताः अनुमतेन्द्रमग्रस्ताः सरस्वतेन्द्रमग्रस्ताः देवसविता प्रासावेः पवित्रमसि पवित्रं मे भुगा स्वाहा पूर्णमसि पूर्णमे भुगा स्वाहा सदसि सन्ने उत्तरतपरिमपनगा पश्चिमतो विष्णु सदनमसे दक्षिणतो विष्णु सदनमसे उत्तरतो विष्णु सदनमसे प्राच्यां विष्णु सदनमसे ग्रन्थिं विसृज्य अग्निप्रोक्ष आप्यायन्तामापवोषधगो मरतां प्रशतयस्ततिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरगस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं भूतिस्मातेति भस्ममालिप्य भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय शताय बलाय शतं च वर्षसे त्रयायुषम् अपोहिष्टामयो भवस्तानवूर्जे ददादना महेरणाय दक्षसे ओम च मे स्वरश्च मे ज्ञोपचते नमश्च यत्ते न्यूनं तस्मै ते उपयत्ते तिक्तं तस्मै ते नमः बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा वषडर्धहारमुपाग्नगे जातवेदसे भगवान् प्रज्वलित ओं नमः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशना यत्हुतं तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषान् शेषाणां कृष्णान् स्मरणं पदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यर्घाचमनीयं समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः यज्ञेश्वराय नमः गुडोपहारं निवेदयामि। यज्ञेश्वराय नमः आद्यशेषं समर्पयामि। तत्सब्रह्मार्पणमस्तु। सर्वं श्री भूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேசாய். கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், பூர்ணாகூதி, அஞ்சன விடுதலை சேவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். இந்த வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய அந்த 143 பாசுரங்களிலே நாச்சியார் திருமொழியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட 11 பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டுகிறார்கள். இதனுடைய காரணம் என்னவென்றால், அந்த வட்டபத்திர சாயியை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே ஆண்டாள் திருமணம் செய்து கொண்டதாக கனவு கண்டு தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் படலுமே இந்த வாரணமாயிரம். அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டி கைங்கரியத்தை முடித்தார்கள். அடுத்ததாக மாலா பரிவர்த்தனம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே எழுந்தருளிருக்கும் ஆண்டாளானவள் அந்த புஷ்ப கைங்கரியத்திலே தன்னுடைய தந்தையாருடன் ஈடுபட்டு பாசுரங்களுடன் பாமாலையுடன் பூமாலையையும் தொடுத்தாளாம். அப்படி தொடுக்கப்பட்ட அந்த பூமாலைகள் தான் பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பிராட்டி சமர்ப்பித்த மாலையானது கொண்டு சென்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு மாலையை சாத்தி அந்த தாயாருடைய திருவடிகளை சரணாகதி செய்து சேவிக்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து அந்த மாலையை கொண்டு சென்று பகவானுக்கு சமர்ப்பிக்கிறார். வேங்கடவனுக்கு அந்த மாலையை கொண்டு சென்று அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சப்தகிரி வாசனே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா. அடுத்ததாக அவரை சேவித்து அதே மாலையை கொண்டு சென்று மீண்டும் யார் அந்த பெருமாளுக்கு மாலையை சமர்ப்பித்தாளோ அவளுக்கு அணிவிப்பதற்காக கொண்டு செல்லுகிறார். அதாவது சூடிக் கொடுத்த நாச்சியார் என்கின்ற பூமி பிராட்டிக்கு தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த மாலையை கொண்டு சென்று திரும்பவும் பெருமாளுக்கே சாத்துகிறார். இப்படியாக அந்த மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியம் முடிவு பெற உள்ளது. ஆபத் பாந்தவா அநாத ரக்ஷகா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இதோ மாலா பரிவர்த்தனம் முடிந்த பிறகு ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை பகவானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே அந்த சிம்ஹாசனத்திலே அமர்த்திய பிறகு அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பராலு கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இதோ அக்ஷதாரோபண கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். மூவரின் சிரசின் மீதும் தூவி அந்த அக்ஷதையை தூவுகிறார். அக்ஷதாரோபண கைங்கரியம் தலம்பராலு. அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனம்.
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడిగిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश